Hello friends, welcomes to Biren's Academy. I am Pramila. Today we will going to start a new topic from Unit 4, that is pathetic fallacy. The term pathetic fallacy was coined by British writer named John Ruskin. Okay, the term pathetic fallacy was coined by British writer named John Ruskin. You have to remember the name, that is John Ruskin. And the John Ruskin in his book Modern Painters 1856, that is Modern Painter 1856. You have to remember this. The pathetic fallacy was the term coined by John Ruskin in his book Modern Painter in 1856. Pathetic fallacy is a specific type of personification or the attribute of human emotion and conduct to the things found in nature. What is the meaning of pathetic fallacy? Pathetic fallacy is a specific type of personification. Okay. In the before class, I have already discussed about the personification. I have discussed it in a very clear manner. I hope you all understood that. So, the pathetic fallacy is a specific type of personification or the emotion, that is the attributes given to the nature. Okay. Given to nature, that is known as pathetic fallacy. See, there is a difference between pathetic fallacy and personification. Don't confuse about that. I have already discussed. What is personification? Personification is a figure of speech in which an inanimate object is liked or to spoke as a person. Okay, a inanimate object is like or to spoke as a person. गोटे inanimate object माने lifeless object को आमे ताको मनीष हिसाब रे ताको लाइफ अच्छी भाबिकी ताको व्यवहार करबा सेटा होची personification. But the pathetic fallacy is that the human emotion and attributes given to nature. जो आमरो human emotion अच्छी से human emotion the nature को present करबा सेटा होची personification. Sorry, pathetic fallacy. बुझी पारलो personifications कौन गोटे inanimate object को आमे living being हिसाब रे नेबा. बुझी पारलो गोटे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग हिसाब रे नेबा होची पर्सनिफिकेशन. जेमिति कि आमे कहूचु एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर हला. एक्सपीरियंस को आमे टीचर भली नोचुए. अंडरस्टूड? यू आर टेकिंग दैट एक्सपीरियंस एज ए टीचर लाइक दैट. मु जेमति कहितली अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट बट वंस. ओके, हाउ द अपॉर्चुनिटी इज टेकन एज ए पर्सन, सेटा होची हमरो पर्सनिफिकेशन. पैथेटिक फैलेसी कौन एटी ह्यूमन इमोशंस को दिया होची. बुझी पारलो. फॉर एग्जांपल देखो, इफ ए राइटर मोर्निंग्स द डेथ ऑफ ए लव्ड वन राइट्स दैट व्हेन ए राइटर मोर्न्स अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, ओके, लव्ड वन, he says that the flowers on the grave dropped in sadness. Okay, the flowers of the grave drop in sadness. Sadness कौन गोटे ह्यूमन इमोशंस टा से इमोशन को आमे कौन करछे फ्लावर को दौचे. बुझिपारे ह्यूमन इमोशन को गोटे नेचर रे आमे रिप्रेजेंट करछु ह्यूमन इमोशन को. सेमिति आउ किछ एग्जांपल नेबा. द रूड सी ग्रू कोल्ड एट हर सॉन्ग. ओके, रूड सी, रूड किए हे परिबो, रूड किए हे परिबो, रूड होची गोटे ह्यूमन बीइंग हे परिबो, रागी परिबो मनीष. बुझि परछो ह्यूमन बीइंग से हे परिबो. से ह्यूमन क्वालिटी को आमे दउचे सी को. बुझि परलो, सेटा होची हमर पैथेटिक फैलेसी. जेमति कि आउ किछ एग्जांपल लेबा. जेमति लीव्स डांसिंग. ओके, सपोज बाबा फ्लावर्स आर डांसिंग. आमे कहचे फ्लावर्स आर डांसिंग. द ह्यूमन इमोशन ह्यूमन क्वालिटी डांसिंग सेटा आमे कोन करचे फ्लावर्स को देले. ओके, दैट इज पैथेटिक फैलेसी. जेतेबेले पैथेटिक फैलेसी कौन गोटे ह्यूमन इमोशंस को आमे नेचर को दे दबा रिप्रेजेंट करबा. बुझि परलो, सेटा होची हमरो पैथेटिक फैलेसी. पर्सनिफिकेशंस कौन जेतेबेले गोटे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को आमे मनीष बा लिविंग बीइंग हिसाब रे नबा. अंडरस्टूड? सेटा होची हमरो पर्सनिफिकेशन. आई होप you cleared about
these two terms and the pathetic fallacy. If you have any doubts, you can ask me. Okay. Thank you for the class.